So today we are meeting after, I don't know, maybe 2 to 4 days, and yeah, we have completed our uh, topic that was of trees, and we'll move on and consider our next topic as heap. Okay, so let's create an empty book. Heap. Get started. Okay, so let me check once if we are um, good to go. Yes. Okay. Yeah. So today our topic of discussion is heap. Okay, this is a very important topic because uh, there are many applications to this particular topic. Okay, so even uh, if you go ahead and read algorithms like Dijkstra's and Floyd-Warshall algorithms and stuff, so there also you will need some things that uses this heap data structure. Fine. Let's see what we'll be discussing today. The first of all, we'll be discussing some concepts, of course, because this is the first lecture we will be doing on heaps. Second, we will be looking at what priority queues are. Okay, priority queues. This will also involve, the operations that is done in this particular data structure, which are insertion, deletion, updation, and stuff. Okay, so these are the things that we'll see, and if in the end we have time, we'll be doing this kth largest in a stream. Okay, so this is a question on lead code, and that's 703. So we'll be doing this, right? So let's get started with the introduction of heap, what heap is, and how do we visualize this data structure for further benefits of so that we can extract further benefits, right? Um, so as the name goes, okay, what is the name? The name is heap. So if you have ever seen a haystack or thing like that, how does it look? It is a small hill kind of a thing, okay? And so this is the base, right? This is the base. Even if you see in sand piling, so these are the kind of structure that it forms, okay? And this is what in general English is called heap. Now this is a kind of a data structure that we are going to visualize, and hence the name as heap, okay? So how does this heap look, or how can we visualize in this particular form? But it's just there's difference that instead of these particles in a sand, we'll have nodes of a tree. Cool, right? So let's see. So heap is a complete, you can say, okay, instead of heap, heaps are, okay, trees, okay, but if we discuss about a binary heap, okay, then that will be a complete binary tree, okay, and most probably this will be our area of interest, that is binary heaps. Okay. So binary heaps are complete binary trees. Now, what are complete binary trees? I have already told you in previous lectures. So there are different types of binary trees: complete, fully complete, okay, balanced binary trees and stuff. So what complete binary trees is that every level is full. This is the first point. Every level is full. Full as in has two children or zero children. Okay. Let's write two or zero child. Every level is full except the leaf nodes
can possibly be on the right. Okay, so there are two very non-significant looking words here which are actually very significant. One is except and the other is possibly. Okay, the leaf nodes can possibly be on the left. Now what does this mean is कि हमारा एक ट्री का बाकी जितना भी नोड्स है और rather the levels है levels sorry वो सब full होगा except the leaf nodes. So in this particular case these are our leaf nodes, right? मतलब last level sorry, ये leaf nodes at the last level है. You get it, this is the last level. Okay, ठीक है. तो ऊपर का सारा levels full होना चाहिए except the last level which should be on the left hand side. So if yeah, this is a complete binary tree, but this is not a complete binary tree. See, okay, this tree is not a complete binary tree. Why? Because this level is incomplete. ठीक है, लास्ट लेवल तो ठीक है लेफ्ट पे है बट ये पहला वाला का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना दैट एवरी लेवल इज फुल except the last. So this is not the last level and this is not full. So if given there was a node here, it was a binary complete binary tree. But since there is no node present on the right side, so this is not a complete binary tree. So this is one thing. The other thing is this. Even this is not a complete binary tree. Why? Because this, you know, violates the second rule here, and this be the first. So this violates the first principle. ठीक है. ये सेकंड क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में होना चाहिए. ये दोनों जो नोड्स है ये अगर लेफ्ट में होता तो काम हो जाता बट सिंस इट्स ऑन द राइट सो या देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री टू थिंग्स एवरी लेवल शुड बी फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल which should be on the left hand side. सो हीप होने के लिए दो क्राइटेरियाज है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इट शुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. ठीक है. नाउ द सेकंड क्राइटेरिया इज it should follow some properties, some heap properties. Okay, so heap properties. Now what is the heap property? It says that the parent. Okay, so since we have already discussed about trees, so we know the concept of parent and child. So the parent has to be, in mathematical and short terms, has to be greater than or equal to child always. Okay, and this is all over the tree. Or you can have a parent possibly lesser than or equals to child. Again, all over the tree. Fine. Now what does this mean is, suppose we have 8 here, so we need to have both these greater than 8. Okay, there is two things in binary search trees. What we had is, suppose we had 8 here, अगर BST है तो हमारा left side should be lesser और right side should be greater. ठीक है, ये BST का कंडीशन था. यहाँ पे कंडीशन है कि both should be either greater or lesser. ठीक है. So in this case if you are considering this first condition, so parent has to be greater than that of the child. So this can be 6 and 5. Okay. And again, this can be 4 and 3 and so on. And it has to be a complete binary tree. Cool. Then that is a heap structure, binary heap. Okay. You can't have something like this 8 and then 9 and here you have 7. So this violates because 7 is lesser than this and 9 is greater. So this is not and this is fine. So you get what I mean, right? And the opposite is also true. So in this case, you can have 7, this can be 9, this can be 10, this can be 12, 13, anything. Just greater than this parent node. Okay. That is how the heap structure looks like. Na? Niche wala either it goes broader and broader. So if you see here, it goes bigger and bigger and bigger. So this level is much more bigger in terms of size. Okay. Actually values. Okay. So yeah, this is a heap, binary heap. Okay, so we have done, we know what heap is, we know what binary heap is, and we have discussed the properties. Now let's come up to the priority queues. Uh, So there are two types of priority queues. The first one is max heap,
and the second one is a min heap. Okay, we have discussed it all. This is a max heap, and this was a min heap. As the name suggests, max heap में क्या होगा? The root has to have the maximum element. ठीक है, maximum value element, max value element. And in min heap, the root must have a minimum value element. ठीक है. Now this thing is very important. If you ever read about Dijkstra's, which you have to anyhow, okay, or Prim's algorithm, ऐसा कुछ पढ़ोगे. So we need to learn about min heap and stuff and stuffs. Okay, so you can't ignore this heap structure. It is quite very important. Fine. We have Okay, let's this is an example. I've already showed you as examples. This is a max heap where this root is the maximum element and the rest of the child nodes are smaller, and this is the minimum heap where the root is the minimum element and the rest of the child nodes are bigger. Okay. Okay, yeah. Suppose if you give a moment and think whether or not this is a heap. Six or five. Is this a max heap? If you're seeing and if you respond in the chat, that will be quite good. Hello, Sanjay, Shubham, hello. So is this a maxi? Any guesses? You'll have to consider two, three cases only. First of all, the first case, is this a binary heap? Complete binary heap. So ये तो वहीं पे it gets violated that this is not a complete binary tree, right? You see that this node is empty, so this is not a maxi. Okay, it has to be a heap. It has to be a complete binary tree. It has to be follow the heap property, and as well as it has to have this particular thing that the root is a maximum value. Then only it qualifies as a maximum heap. Okay, yeah. So this is clear. Now let's see कि how are we visualizing ये tree structure तो हम लोग ले रहे हैं ना, but how are this data structures presented to us? So it is presented in a form of array or a vector. Now how this happens? See, suppose you have a vector like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो हमें तो ये एक ट्री के फॉर्म में चीजें नहीं दे रहे हैं. ठीक है, they give us in the form of vectors, but we need to make them in the form of trees. So how this works is, okay, listen, this particular thing, okay, is the root. ठीक है, let me write. Root is the zeroth index of the array or a vector, whatever they have provided us with. Okay, the starting index and the address. Okay, this is the root. Now since root has to have two child nodes, so we make one root. Now this has to have two childs. What uh, who are them? These are these particular nodes, which are 2 and 3. ठीक है, let me divide this. तो यहाँ पे 2 आएगा और 3 आएगा. ठीक है, now this 2 also has two children. This 3 also has two children. Now like what are those children? Like यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो for 2, one child is 4, the other child is 5. Cool. So this is 4 and this is 5. Now for 3, you have one child as 6, the other child as 7. ठीक है, so 6 and 7. तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, this is for our visualization purposes. What we are given and what it is, what we will be presenting is this particular thing only. Array structure में ही present करेंगे. The thing is कि we need to access it in the form of heap. How? As I told you, the root is array of 0. Now we have two child, right? One is left child
the other is right child. So if you carefully see in this array representation starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you see, तो जो left child है ना for 0, 0th index, the left child is first index. For the first index, the left child is third index. So 0 के लिए 1, 1 के लिए 3, and similarly if you see um, second index के लिए क्या है fifth, okay, 2 के लिए 5. तो अगर तुम if you try and find that pattern, you will get to know is for every ith index, our left child is always 2i plus 1, given we start the indexing from 0. Okay, in some books you will see that they write as that they write left child to be 2i, okay, and not 2i plus 1. Why? Because they consider the index to start from 1 in theory purposes. Okay, so if you consider Corman or any other popular books, there can be um, you know stuffs where they show left child to be 2 times ith value, okay, where I starts from first. Let me just write it here. I begins from 1. If that's the case, then the left child has to be 2 of I. But in practical purposes, we have the index to be 0. So let's consider the left child to be 2i plus 1. Let's write here 2 times I plus 1. Now what's the right child? That's quite obvious. That is 2i plus 2. Okay, the right child. This is the left and this is the right. So that is 2i plus 2. Okay. Now, what more can we, require to travel or traverse across this particular area? Are you a student of HIT? Yes, yes, Shubham. Um, the next, what we need is we sometimes may need the parent, the child can, sometimes require the address or the index of the parent. So, what will it be? If you see, you just have to divide it by 2. बट किसको डिवाइड करना है? अगर तुम 1 को डिवाइड बाई 2 करोगे 0 आ रहा है, वहां तक ठीक है. बट जैसे तुम देखो कि 1 का 2 चाइल्ड है, ठीक है, 0 का 2 चाइल्ड है, 1 and 2. So if you divide 1 by 2, you get 0. That's quite fine. But if you divide 2 by 2, you get 1, which is not required. We need 0. Okay. For 1, there are 2 children. One is 3 and one is 4, right? So 3 and 4. So if you divide 3 by 2, you get the floor value or integer value to be 1. That's quite good. But then if you divide 4, you get 2. So there is a problem. To uh, you know to remove that particular problem, what we can do is we are considering the floor value of I minus 1 by 2. Okay. This is the floor value, which is the greatest integer function. If you do not have to consider about the floor value, just take a look. But even if you don't have to consider, since we are declaring that as to the indexes to be integer, so it quite automatically falls back to that particular thing. So this is quite very important, and I would like to mark this particular box. पूरा ट्रैवर्सल में अपने को यही लगेगा, 2 times I plus 1, 2 times I plus 2, and I minus 1 by 2. Okay. Okay, so we are done with this. We are done with priority queues. What are left? The functions. Let's see. So there are various operations that we perform. Okay. This is how we read data structures and algorithms. If you have noticed, पहले हम लोग data structure पढ़ते हैं कि है क्या, then we look at the operations what we need to perform at the abstract data type जो बोलते हैं ADT. ठीक है, उसमें क्या क्या operations possible है, insertion, deletion, updation, removal, that's deletion and stuff. ठीक है, और उसके बाद we go on to algorithms कि now what are the possible algorithms that we can make using this particular data structure. Okay, so let's look at the operations. The first operation is get minimum. This is basically extraction, or rather get, or rather let's name it the second as extract min. ठीक है, ऑपरेशंस में जनरली देखोगे तो बाकी सब तो इट्स इंसर्शन डिलीशन ही, पहले वही देख लेते हैं रुको. So how do you insert into a heap? Insertion.
फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी आर टेकिंग अ मिनिमम हीप, ठीक है, मिन हीप। तो मान लो इट्स 6, 7, 8, let's not have the 8 here, make it quite 12, 16, 13 and 14, ठीक है। अभी से we are trying to insert, suppose a smaller value, suppose 1, ठीक है। So what this does is whenever you insert a value, you are particularly, defying the whole structure. अब तुम देखो, is this a mean heap anymore? So if you have inserted one, where will you insert one? अगर तुम एक array में, of course this is an array, right? तो तुम अगर one डालोगे, कहाँ डालोगे? Ending में डालोगे, ठीक है। यहाँ पे one डाले, so if you have to consider it in this node form, then you are inserting one here, ठीक है। But is this particularly a min heap now? No, right? So whenever you are inserting, whenever you are deleting, whenever we are updating, we need to call a function that is called heapify. Okay, this is a very important function. What this does is, once one is inserted at the last possible node, this heapifies the whole structure and tries to maintain back the min heap. Okay, we always need a min heap to get this root to be minimum. Is this minimum? No, the one is at the min position. So what it does is, it will now it will now backtrack and check that is one at the minimum position. So it goes here to the parent node. It checks, no, this is not correct. So it swaps the value. So at the second instance, what will happen is this way, ठीक है। और यहाँ पे 6 है, तो अभी ये इसके पेरेंट पे जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इट गोज बैक टू दिस पेरेंट एंड इट चेक्स वेदर और नॉट दिस इज द मिनिमम, नो, सो नाउ दिस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल वर्जन। सो फाइनली व्हाट यू मेक, 1, 6, 16, the right side is as it is, 13 and 14, this is after heapifying, ठीक है। इसके बाद तेरे को ये मिलेगा, and just give a quick check whether or not this is a min heap. So of course this is a min heap, ठीक है। So this is how you insert. You are inserting a value at the last possible index, ठीक है, and then you keep on checking with its parent. अभी पेरेंट कैसे, जैसे बताया कि i-1/2, ठीक है। ऐसे पेरेंट के पास जाओ, चेक करो whether or not it's small. If it is not, you swap it, okay, and then you continue going back until you are possibly at the root, ठीक है। This is how things are inserted. um, if you have to delete, let's take a look at deletion. अभी डिलीशन वाला अगर कुछ फंक्शन कॉल होता है तो क्या होगा, अगर मान लो यही सेम स्ट्रक्चर है अपने पास, 6, 12, 16, 13 and 14. So now suppose if you want to delete 12, or rather, now one thing that you need to see is deletion is only possible if it is at the last possible index, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि अगर हमने हमने लेट्स से 6 को डिलीट करना है, तो पहले 6 को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, तभी यहाँ से हटा सकते हैं। लेट मी राइट, पॉसिबल ओनली एट लीफ नोड्स। लीफ नोड्स भी बोलो, लीफ नोड्स ना बोल के एट लास्ट इंडेक्स बोलते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, तुम एक बारी को 6 और 14 को स्वैप कर दिए, सो नाउ दिस इज 14, दिस इज 6, ठीक है। नाउ यू आर टेलिंग कि यू डोंट वांट 6, सो ठीक है, यू रिमूव 6, ठीक है। बट देन यू अगेन चेक, um, you check, what do you check, that whether or not it maintains the heap property, ठीक है, min heap है कि नहीं। so अभी तो यहाँ 14 है, and then you again go back to that heapify, ठीक है। वापस से कॉल करोगे, वापस से क्या होगा, ये 6 हट चुका है अब, और 14 विल फॉल बैक टू इट्स प्लेस, दैट्स इट। फिर वापस से हमें min heap एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अपडेशन करना है, if you want to update, what we can do is,
I don't exactly, I have memorized these things, but you can make it up by your own. If you just think for a moment, मान लो हमें 12 हटा के 11 डालना है या something. So you just go and find where 12 is. ठीक है, पहले तो you traverse and get up to 12. Only then you will be able to change, right? So अभी 12 को 11 करना है. So you just swap it with 11. And then you again will have to check with the heapify property. मान लो हमें 12 को हटाकर 100 करना है. ठीक है, तो अभी तो हमारा नोड कुछ इस तरह बढ़ गया ना, 600 16 13 14, but 100 doesn't lie in this particular in the correct position. So what you got to do, what you have to do is bring 100 to its correct position. And how you do that, you again do heapify. ठीक है, तो इन सब केसेस में you'll have to run once in order to heapify things to get that particular thing in the particular position at the correct position. Okay. Okay. नाउ लेट्स, यहाँ पे जो रह गया था गेट मीन एक्सट्रैक्ट मीन. गेट मीन क्या करता है, सपोज यू हैव अ min heap. Okay, generally in general case we will have a min heap. Now as I told you, min heap में root value is the minimum. ठीक है, अभी जब जब हमने एक फंक्शन कॉल किया, द फंक्शन नेम इज गेट min. What this does is returns minimum, minimum value. ठीक है, जब जब गेट min आएगा, दिस इज क्वाइट वेरी ऑब्वियस, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट रिटर्न, अगर एरे में है तो एरे ऑफ the first index, but if it exists, of course, if it exists, then you just have to return the first index. The second is extract min. Now this is a bit different than get min. How is it different? Because as the name suggests, you are extracting min, so you actually you return the minimum value, but return min value along with removal of that node. These all are the things that I am talking in min heap. Okay, इफ यू आर कंसिडरिंग मिन हिप. मैक्स हिप में कुछ चीजें थोड़ा डिफरेंट होंगी. एक्सट्रैक्ट मैक्स कर सकते हो इस केस में, एक्सट्रैक्ट मिन करने के लिए मिन से स्वैप करना पड़ेगा पूरी चीजों को. नहीं, अगर मैक्स करेंगे तो मिन से स्वैप करके नहीं होगा, because you don't know the minimum element lies at the right most or the left most. That won't be a possibility. Extract min एक min heap में possible है easily, because you are returning the minimum value which exists or lies at the root position and you know it, plus you are removing that node. In that case you have to remove this. So अभी हमने रिमूव किया, व्हाट इज द गारंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिमूविंग दिस, सो ये एक ट्री स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक होता है. सो you'll again have to have the minimum here. ठीक है, so what, how do we guarantee that the minimum is here? We again heapify. ठीक है, so this is something you need to see, how do we heapify. इसका रिकर्सिव तरीका भी है, इटरेटिव तरीका भी है. जस्ट गो एंड चेक वंस, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे दैट विल बी यूजिंग एसटीएल्स. ठीक है, ठीक है, विच आर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जहाँ पे हम लोग को सी प्लस प्लस में you have heap, you have priority queues, so we'll be directly using it. What your homework will be to just check this function, heapify function. ये समझ जाओगे तो पूरा heap structure ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा. इंसर्शन डिलीशन भी समझ में आ जाएगा, बस स्वैपिंग देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या क्या स्वैप होता है किस पोजीशन पे. ठीक है, okay, so extract min get min is done. Now let's move on to the question. What's the time? It's 8:31. Okay. Let's copy it. Hmm. So what does this question tells us? It says kth largest element in a stream. Okay, in a stream.
Now you are a part of university admissions office and need to keep track of the kth highest test scores from applicants in real time. This helps to determine cutoff marks for interviews and admissions dynamically as new applicants submit their scores. You are tasked to implement a class which, for a given integer k, maintains a stream of test scores and continuously returns the kth highest test score after a new test score has been submitted. Okay, so you are continuously updating things. Okay, we'll see what it means. More specifically, we are looking for the kth highest score in the sorted list of all score. Okay, implement kth largest class. Now the format. यहाँ से देखो. So in this kth largest class, we are given two things: kth largest and int that adds. So this is a constructor. Okay, this is a constructor with particular parameters. Okay, will get on to what it is, and then you'll have to return the integer and of course also add the value and return the integer. See, initializes the object with the integer k object because it's a class. Whenever you are defining an object with the same class instance that catches the parameter that you pass and puts that parameters into this particular object with the integer k and the stream of test score nums. So this nums is integer array. Okay, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में C++ में. ठीक, तो हमें एक वेक्टर फॉर्म में we are given this kind of input and you say that you in adds a value, a new test score val to the stream and returns the element representing the kth largest element. So ये add के फंक्शन के अंदर हमने add भी करना है और return भी करना है. ठीक है. ओके. तो देखो इनपुट अगर तुम समझोगे तो ये पहला इनपुट है. देखो दिस, इफ यू टेक a peek into what this input is, तुम देखोगे कि हमें दो वैल्यूज पहले प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू भी प्रोवाइड करना है, के और नम्स. तो फर्स्ट हमारा के क्या है, 3 जा रहा है और नम्स क्या जा रहा है, वी हैव 4 5 8 एंड 2. ठीक है, ये वेक्टर है. नेक्स्ट व्हाट वी आर टोल्ड इज टू ऐड 3 इनटू दिस वेक्टर, दैट इज वी आर पुशिंग बैक 3 इनटू दिस वेक्टर. Next, what we are told to do is we are pushing back 5 into this vector. And every time we are pushing back things into the vector, we need to return k largest. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे. एक तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि सिंस एरे सॉर्टेड नहीं है तो जब जब हमें एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव दिस. ठीक है, अभी जब भी एक ऐड फंक्शन कॉल होता है दैट इज वी नीड टू पुश 3 इनटू द वेक्टर. सो हम क्या कर सकते हैं, के रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है, के इज द थर्ड लार्जेस्ट तो थर्ड लार्जेस्ट ही देना है. अभी इस पर्टिकुलर वेक्टर को पहले तो सॉर्ट कर दो. तो वी हैव 2 4 5, नॉट एक्चुअली पहले सॉर्ट करो, पहले यू विल हैव टू पुश इट. यू पुश 3 इनटू द वेक्टर. ठीक है, यू पुश 3 इनटू द वेक्टर एंड देन यू सॉर्टेड इट. सो 2 3 4 5 8. सो ये हमारा वेक्टर बन के आ रहा है, थर्ड लार्जेस्ट बोल रहा है. सो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो यू रिटर्न 4. ओके, यू रिटर्न 4. ठीक है, द सेकेंड टाइम वी आर टोल्ड टू इंसर्ट 5 अगेन. ठीक है, तो 5 अगर हमने 5 इंसर्ट किया और फिर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 5 इंसर्ट करोगे तो एक्चुअल केस ये बनेगा. ठीक है, 5 एंड में इंसर्ट होता है बट सिंस वी आर सॉर्टिंग इट सो वी हैव दिस. ठीक है, अब 1 2 3 5 मैचेस. नाउ वी नीड टू पुश 10 अगेन. तुम यहाँ देखो 10 पुश करके कुछ ऐसा केस बनेगा, वी स्टिल हैव 5. ठीक है, 9 you will push, you will have 9 here, we'll have 8 here as the output. You 4 push, you have 4 here, we still have 8 as the third largest. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हमने देख के क्या समझा कि okay, देखो पहले ऑफ ऑल सॉरी, वी नीड टू क्रिएट अ वेक्टर जहाँ पे हम विल हैव थिंग्स. और क्या समझे हम कि जब जब हमारे पास
एक वैल्यू पुश करने को बोला जाएगा, रादर ऐड फंक्शन कॉल किया जाएगा, तब हमने को क्या करना है, we'll have to push back the value first, then we'll have to sort the array second. Next what we need to do is we'll have to return, अगर तुम सोचो क्या रिटर्न करना है, array of जो साइज है उसमें से k माइनस कर दो, उस वही तो रिटर्न करना है ना, इफ यू गेट इट, क्या रिटर्न करना है, जो साइज है उसमें से 1 2 3, एक्चुअली 1 नहीं, k डॉट साइज यहाँ पे कहीं पॉइंट करता है, सो यू -1 2 and 3 एंड हेंस रिटर्न द थर्ड इंडेक्स, ठीक है। ये करना है पूरा ब्रूट फोर्स में, अगर तुम देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक प्राइवेट या पब्लिक जो भी बनाओ, उसके अंदर you'll have to have k and then you'll have to have a vector integer vector नाम दे देता हूँ, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। अभी सिंस हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर है, सो you'll have to define that this k is equals to k and this vec is equals to nums, ठीक है। जब जब एक एक नया एरे हमें दिया जाएगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बना के नम्स पास किया जाएगा, हम लोग सीधा उसको वेक्टर में डाल देंगे। अब जब जब एक वैल्यू आता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, विल पुश बैक द वैल्यू, सो वेक डॉट पुश बैक the back. Next we are gonna sort and sort what, vec dot begin से, if you remember we do it like vec dot end, यहाँ से हमने सॉर्ट किया। अभी सॉर्ट करने के बाद डायरेक्टली रिटर्न vec of vec dot size, बस और कुछ तो नहीं चाहिए, ये बस इतना है। अभी तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, इसको चलाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर रहेगा। ओके, वो चलेगा अगर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आएगा, क्योंकि इसका अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे, तो whenever you are passing a number, ठीक है, so suppose you passed m numbers, ठीक है, तो every time you pass m number you are sorting it, and sorting takes order of n log n, right, right, so ये overall क्या complexity दे रहा है, इसके overall complexity what you making is, ये brute force algorithm को order of m into जो sorting में लग रहा है, that is n log n, ये तुम्हारा overall complexity हो जा रहा है। we can have a better complexity, why, how, by creating heaps, ठीक है। हीप में जैसा कि बताया, एक्सट्रैक्शन इज इजी, एक्सट्रैक्टिंग मिन मैक्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स रहे ना, एक्सट्रैक्टिंग मिन मैक्स, अपडेटिंग, इंसर्टिंग, ठीक है, अपडेटिंग नहीं, सॉरी, अपडेटिंग नहीं बट इंसर्टिंग, तुम एरे में अपडेट करने जाओगे तुरंत हो जाएगा, बट जैसे इंसर्ट करने जाओगे यू हैव टू हैव पूरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला चीज, तो इंसर्शन, डिलीशन, थोड़ा राइटिंग का देख ले यार, ठीक है, मिन मैक्स अपडेट डिलीट, ये सब जहाँ चीज रहेगा तो दिमाग क्लिक करना चाहिए कि हीप लग सकता है, ठीक है। चला, हाँ चला, सबमिट करे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आएगा, मतलब टाइम लिमिटेशन एरर आएगा, और फिर मेरे को मेरा एक्सेप्टेंस रेट कम हो जाएगा भाई, रहने दे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये चल जाएगा, बट टाइम नहीं आएगा सही। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, कि वी मेंटेन अ प्रायोरिटी क्यू, कैसे, यूजिंग सी प्लस प्लस एस टी एल। अभी सी प्लस प्लस के एस टी एल को प्रायोरिटी क्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वी हैव, जैसे हम लोग सेट और वो सेट, जैसे हम लोगों ने सेट पढ़ा, हम लोगों ने क्यूज पढ़ा, हम लोगों ने राइटिंग को क्या हो गया यार, क्यूज पढ़ा, हम लोगों ने स्टैक पढ़ा,
हम लोगों ने पेयर पढ़ा, हम लोगों ने मैप पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। इतना तो पढ़ा ना कम से कम। बस ऐसी एक और है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, बस ऐसे। और यू हैव अ नेम। ठीक है, अगर तुम प्रायोरिटी क्यू इंट लिख के छोड़ दो और यहाँ पे पी क्यू दे दो, तो यू हैव अ प्रायोरिटी क्यू जहाँ पे इंटीजर्स रहेंगे और ये तुम्हारा नेम होगा ऑफ कोर्स। दिस इज द डेटा टाइप एंड दिस इज द नेम। ठीक है, इसको तो हटाओ साइड में। Fine. अभी ये तो एक तरीका है। वन सेकेंड। हाँ, ये तो एक तरीका है। द सेकेंड इज प्रायोरिटी क्यू। जब हमें मिन मैक्स डिफाइन करना पड़े ना, मतलब कि किस बेसिस पे वो क्यू बनाना है, जैसे इन दिस केस हमने एक मिन क्यू बनाना था, रादर एक मिन हीप बनाना था, तब हम लोग क्या कर पाएंगे? आई टेल यू। इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले एक मिनिमम हीप बना लो। ठीक है, जब जब यू हैव अ वैल्यू यू कीप ऑन इंसर्टिंग, जब तक whenever you have a number of insertions less than k, what you do is you keep on inserting। ठीक है, और जैसे ही मोर देन के होगा तो तुम पॉप करना स्टार्ट कर दो। तुम इस एरे में देखो क्या करो। वी हैड 4 5 8 2 3। अभी मिन हीप तुम बना रहे हो, मिन हीप बना रहे हो ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है। ठीक है, तुम्हारा यही स्ट्रक्चर आएगा कि सबसे पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा। अभी आगे तुम कुछ भी डालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 डालोगे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनी हीप है। तुम वो हीपीफाई कॉल कर रहे होते इंटरनली। ठीक है, और वो बहुत फास्ट रहता है, वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन वाला। हाँ वही है, बट यू नो देर इज अ डिफरेंस इन केस। ओके, लेट्स लेट्स फर्स्ट सी व्हाट क्या हो रहा है। तुम मिन हीप में क्या करोगे? ऐसा कुछ एक ये बनाओगे हीप कि यहाँ ये पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। और जैसे ही यहाँ नहीं, सॉरी, जैसे ही चीजें अबव के जाने लगेंगी, लाइक 1 2 3 डाला, 4 is more than this, 5 is more than this, so what you need to do is you remove this 2 बार, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली लास्ट थर्ड एलिमेंट बचेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? जैसे ही वैल्यू जो तुम इंसर्ट कर रहे हो दैट गोज बियॉन्ड के, you start popping things out from the heap and you will be left with 4 at the top node, क्योंकि बोले ये हीपी फाइबर है इंटरनली। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? हीप का जो साइज है, hp डॉट साइज लिख रहे हो अभी भी। अगर ये लेस देन के है तो यू सिंपली इंसर्ट इनटू द हीप, बट इफ दिस इज मोर देन के, लेस देन इक्वल्स टू के, इफ दिस इज मोर देन यू पॉप फ्रॉम द हीप। और लास्ट में जो ऊपर में बचेगा, जो हमारा रूट एलिमेंट रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो? बट इसको डिफाइन करने के लिए, एक मिन हीप डिफाइन करने के लिए तुम्हें कुछ कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो you'll have to define the data type. The second you'll have to define is container. ठीक है, the type of the container that this will be using, and by default it is a vector. You can define it as vector integer. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो लिखते हो ना, this is the most important part. You write two things here, okay? You write two things. The first thing is either you write greater and you define the type, or you write less int. जब तुमने लिखा greater int ऐसे करके और यहाँ पे नाम दिया सेम भी, और मिन हीप है तो इमेज, इसको हटाओ यार। ठीक है, तुमने नाम दिया इमेज। अभी ये जो चीज है, दिस इज अ बाइनरी फंक्शन। ठीक है, व्हाट दिस डज इज इट कंपेयर्स बिटवीन टू एंड सेट्स द प्रायोरिटी। क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम एक ग्रेटर इंट लिख रहे हो तो ये क्या करेगा?
जो भी स्मॉलर वैल्यू होगा ना उसको ये ज्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है। एंड इफ यू राइट लेस इंट, सो व्हाट दिस डज इज whichever is the greater value और जो भी ज्यादा वैल्यू होगा लार्ज, वन सेक, in this condition whatever will be the larger value among the two that will be gaining the better priority, right? तो हमें क्या चाहिए, हमने चाहिए मिन हीप। तो मिन हीप में सबसे ऊपर पे किसको रखना है, रूट लेवल पे जो भी स्मॉल एलिमेंट हो, ठीक है। यू कैन राइट इट एज अ बाइनरी कंपैरेटर, एक्चुअली दिस इज अ बाइनरी कंपैरेटर फंक्शन, ठीक है। जो कि क्या करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा, ये प्रायोरिटी पैरामीटर्स सेट करता है, ठीक है। दिस इज ओनली क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग और मेकिंग मिनी हीप और मैक्स हीप। तो अगर तुम ग्रेटर इंट लिख रहे हो, सो दैट इज सेटिंग द प्रायोरिटी एंड गिविंग द वैल्यू ग्रेटर प्रायोरिटी टू द नंबर दैट आर स्मॉल, ओके। अभी ये लिखा हमने, तो अभी देखो क्या करना है। नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ मिनी हीप, वही एक्सटीएल यूज करके। क्या हो गया रेटिंग को, मिनी हीप बनाया वो प्रायोरिटी क्यू यूज करके, ठीक है। अभी जितना नम्स में जो ऑलरेडी है उसको तो हमने इंसर्ट करना होगा सब, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो तो तुम इंसर्ट करोगे हीप में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करो, ये तुम्हारा केथ का फंक्शन है, केथ लार्जेस्ट वाले का, उसको इंसर्ट करो, उतना दूर तक फाइन है। अभी यहाँ पे भी क्या सीन है कि अगर इफ वो जो हीप का साइज है, इसको लेट्स से एम एच बोल रहे हैं, एम एच डॉट साइज ये ग्रेटर देन के है, तो यू नीड टू पॉप एम एच डॉट पॉप, ठीक है। वो टॉप वैल्यू पॉप करता है। और ये सेकंड ऐड फंक्शन में क्या करो, सेम चीज, एग्जैक्ट ये सेम चीज, यही चीज कॉपी पेस्ट, बस। समझो क्यों ऐड कर रहे हैं हीप में, सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन रिटर्न क्या करना है बता, पॉप करने के बाद रिटर्न क्या करना है, यू कैन राइट इन चैट, रिटर्न क्या करना है। एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू रिटर्न द रूट वाला एलिमेंट, इन दिस केस व्हाट्स द रूट, जो भी हीप बनाया है उसका ना, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं डॉट टॉप बोल के, जो सबसे ऊपर रूट पे है उसको, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको चलाएंगे तो एरर आएगा, नहीं चलाना। सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, सो प्रायोरिटी क्यू, हाँ हाँ, सॉरी, as I told you we need to have data type, what do we need to have, the container, that's our vector int, then we are defining the binary comparator function, right? So that is created, heap नाम देगा, ठीक है। और अपने को एक k चाहिए। अभी यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉट k जो है, नॉट डॉट बट दिस k इज k, है ना। अभी वो जितना वैल्यूज है, ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यूज है फॉर num that belongs to nums, what do we need to do, we are inserting things into the priority queue जिसका नाम mh है, ठीक है। so mh dot push, and what do we push, we push num, and if mh dot size is greater than k, what do we do, we mh dot pop, बस। ये हुआ। अभी ऐड वाले फंक्शन पे देखो क्या बोला था,
सेम पुश करते रहना है, बट अनटिल अनलेस वो साइज जो है वो के से छोटा रहे, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज image डॉट पुश वैल्यू विच एंटर्स, और वो प्रायोरिटी क्यू खुद में ही मेंटेन कर रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। एंड नाउ इफ image dot size is greater than k, and you simply return image dot log, ठीक। देखे चलता है कि नहीं? सी वर्क्स। यहाँ पे एक ही चीज का काम है और वो है ये डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रायोरिटी क्यू। ये लोग क्या किया है भाई, प्रायोरिटी क्यू सेम है, तो उतना मत दिमाग लगाइए, इट्स द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग दैट दिस creates many, it's fine. Let me also write for, we have two comparator functions and these are greater in comma, greater int ये क्या करेगा, तुम्हारा min heap बनाएगा, and you have less int, what this does is we create max heap। ये बनाया k किया, यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, this is just popping, that is quite obvious, and this is what you are returning, this is the kth largest element, but the top position signifies that you are returning the position of the root, ठीक है, जो भी रूट पे एग्जिस्ट करता है। कॉपी एंड पेस्ट इट, इधर क्या लिखा था पढ़े ही नहीं हम लोग तो, योर kth largest object will be instantiated and called as such, you will create an object in that, ठीक है। इसको पेस्ट करा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस जो ये एक इंसर्शन में टाइम लगता है मेन, तुम एक पूरा, तुम ट्रैवर्स मतलब जितना भी एलिमेंट्स है उतना पूरा तुम डाल रहे हो तो इसको, तो ये तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा तुम्हारा पूरा। दिस इज व्हाट आई हैव टू सी, आई थिंक दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, यस लॉग एम, तो यहाँ पे तुम्हारा एन क्रॉस लॉग एम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा शायद से, लेट मी चेक, लेट मी चेक दिस, ओहो के लार्जेस्ट एलिमेंट तो ठीक है, इंसर्शन यूजिंग लॉग के हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल कितना एन लॉग के, राइट, हाँ वही है वही है वही है, क्योंकि ये लॉग ऑफ, जितना बार एलिमेंट पुश कर रहे होते हैं ना उतना वो टाइम लेता है, आई मीन एक बार तुम देख लेना खुद से कि ये लॉग का टाइम क्यों लेता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन्स वो बाइनरी हीप वाला प्रॉपर्टी ना, तो वो जितना भी पीछे जाएगा हाउ लॉन्ग इट विल गो बैक, जितना साइज हाइट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, कितना ट्रैवर्सल्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्री, राइट, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज लॉग, नॉट ऑर्डर ऑफ, लॉग बेस टू एन, ठीक है। इसीलिए ये इतना ही टाइम ले सकता है, मैक्सिमम ट्रैवर्सल्स ये इतना ही करेगा, तो ये जितना बार तुम पुश कर रहे हो एक एलिमेंट को, जब भी तुम इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्शन that is nothing but inserting into a binary tree and that takes log of n time, agar n is the number of element that you are inserting, so overall this takes log of n times, and if you see the time complexity is o of n log n, उसमें भी डिपेंड करता है तुम कितना बार इंसर्ट करा रहे हो चीजों को, ठीक है।
एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बेनिफिट क्या है, क्योंकि तुम यहाँ एन नहीं ले सकते, चल सकते, तो पहले जो हम लोग पुश कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा अमाउंट है ना, मतलब लेट्स से ये एम है, मतलब हम ये बोल रहे हैं, ये जो पहले से हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा एलिमेंट्स तो नहीं है, बाद बाकी बाकी सारा बाद में आने का है, तो अगर वी कंसिडर इट टू बी एम एंड द रेस्ट which is to be inserted, we consider that to be n, तो ये तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ m टाइम्स चल रहा है, बिकॉज यू आर इंसर्टिंग ऑल द नंबर्स, एंड हाउ लॉन्ग दिस टेक्स ऑर्डर ऑफ log ऑफ m, ठीक है। और अगर बाद में तुम n नंबर और लेट्स से k नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम पुश कर रहे हो, इस फंक्शन को तुम k बार कॉल कर रहे हो, ये पूरा फंक्शन को, तो ये जब पुश करेगा दैट विल टेक o ऑफ log k प्लस m होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज m एलिमेंट्स पहले से है, ठीक है। वो बहुत डेप्थ में जाके अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, बट ओवरऑल सिंस हम लोग बिग ओ के टर्म्स बात कर रहे हैं, सो राइटिंग दिस इज वेरी सेफ, दैट इट टेक्स ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा खुद बता, सोच। जैसे हमने स्टैक यूज किया था, ऑर्डर ऑफ n लगा था, हमने यहाँ भी प्रायोरिटी क्यू यूज किया है, तो ऑर्डर ऑफ n, वेर n इज द टोटल एलिमेंट्स which we are pushing into the vector finally, ठीक है। तो बस, और आज के लिए इतना ही फिर, एक रिविजिट देना, मतलब एक बारी just go through it once, whatever you don't understand, just uh, you can text me in the community or anywhere, and I will be very uh, excited to help you, right? So that's it for today, and if you are following me, you'll learn. Even if you won't learn, you'll at least get the uh, motivation to learn. Okay, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, एंड see you then. शुभ रात्रि, बाय बाय।